So, hi Samyak, how are you? Hi Vivek, I'm doing good. What about you? How are you doing? I'm doing good. I'm so grateful to have you on a Sunday morning. Definitely. Thanks for having me here. Yeah. So, Samyak, can you introduce yourself? Like, what do you do? Where you come from? Yes. So I am a 24-year-old who left his job, joined his family business, later realizing that there are a lot of inefficiencies that exist in the market, in this whole infrastructure market, if I tell you about. So after realizing that, I started my own company. So that was 6 months back. I started my company, and so I'm the founder and the CEO of MyInfra App. Okay, and what exactly does MyInfra do? So basically, my infra Gana concept is very simple. So we are trying to digitize the whole infrastructure procurement, material procurement space. So we are catering to the market of builders, interiors, architects, and contractors, and we are digitizing the whole process in which they procure materials, they manage their cash flows, they manage their particular site. So we are trying to digitize everything. Okay. So, Samyak, are you the only one catering to the problem right now, or are there any competitors that are there? So there are a few other players that are catering to this B2B marketplace if we talk about with respect to the material space. But their approaches are very different. The categories that they're dealing in are very different from what Mindfra is dealing in. The target audience, if I specifically talk about, is actually very different. So if I specifically talk about Mindfra, so we are catering to the market of small to medium level builders, contractors, architects and catering to four different categories of products. So we are bringing all these four different categories of products under one roof. So अगर मैं चार categories की बात करूं तो वो categories है first being the structural material category, that is cement, aggregate, dust, etc. Second being the TMT, steel and bars. Third, wooden materials, and fourth, chemicals and adhesives. So we are trying to bring all these products under one single roof. ओके एंड हाउ एग्जैक्टली डू यू गेट टू नो कि ये ही मेरी टारगेट ऑडियंस है तो इधर कोई और नहीं है आई एम द ओनली वन केटरिंग टू दिस सेगमेंट हाउ डू यू लाइक मैनेज इट So basically, to find this out, कि और कोई है नहीं है, we did a lot of research before starting my infra. And coming from the business family, coming from the same family with the same from the same industry, so I knew the psyche of the customer, of the client. उनका हमें ना साइकोलॉजी पता है कि उनका परचेजिंग बिहेवियर कैसा है, कि वो मटेरियल कैसे परचेज करना चाहते हैं, या फिर उनको क्या मटेरियल चाहिए, किस कस्टमर को what quality of material we need to serve. So we understood that and we incorporated that in the application. Coming to the point कि हमारे को competitive landscape का कैसे पता चला. So we did a very in-depth research about the competitors. So there are a few companies जो कि cater कर रही है just to the category of professionals like plumbers, painters, fabricators, etc. And there are a few companies who are targeting big builders like DLF, M2M, M2K, etc., etc. So इस एनालिसिस के बाद वी रियलाइज दैट देयर इज अ गैप जो कि अभी तक किसी और ने फुलफिल नहीं करा है, एटलीस्ट नॉट सक्सेसफुली. तो वी स्टार्टेड विद दैट एंड हमने उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करी. ओके सो आपका जैसे नाम सजेस्ट करता है माई इंफ्रा ऐप so are you the only one creating an application for this or are there any more companies which are leveraging technology like this? सो राइट नाउ अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन के थ्रू कोई कर रहा है तो देर इज नो वन हु इज डूइंग इट थ्रू द एप्लीकेशन. वी आर द ओनली वंस हु आर सेलिंग द मटेरियल्स, the wooden materials, the structural materials, chemicals, TMT steels through a mobile application jahan pe you can check the live pricing of the material, because the pricing of these materials keeps on changing very frequently. If not daily, but weekly basis, but in 3 4 days it keeps changing, and we are the ones who are updating the pricing on our application, and a person can come to check the price and directly purchase it. सो व्हाट पीपल हैव बीन डूइंग इज पहले लोग क्या करते थे. फॉर एग्जांपल इंडिया मार्ट आपने देखा होगा, तो उधर एक गेट कोड का फीचर होता था, उधर आप जाके कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो, ठीक है. इसके अलावा इफ यू सी अदर कंपनीज, तो
देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो इन्होंने ट्राई करा है इस B2B स्पेस में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का, बट बिकॉज प्राइस चेंज इतना फ्रीक्वेंट होता है कि वो गेट कोड का फीचर देते हैं वहां पे, एक डायरेक्ट प्राइसिंग नहीं दे सकते, क्योंकि बिकॉज इफ द प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट इज 350 और वो करंट डेट पे उन्होंने 350 डाल दिया एंड दे डू नॉट अपडेट इट वेरी फ्रीक्वेंटली, तो प्राइस अगर 370 रुपए भी हो गया ना और उन्होंने वो प्राइस 350 डाला होता तो दिल इनकर अ लॉस. दैट्स व्हाई दे पुट अ गेट कोड फीचर रादर देन पुटिंग द प्राइजेस एंड कि कस्टमर आए और डायरेक्टली खरीद ले. ओके. सो आप जो ये है मैनेज कैसे करते हो प्राइस अपडेशन? प्राइस अपडेशन, ओके. सो बेसिकली हमने पूरी सप्लाई चेन सेट करी है. वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कंपनीज. वी गेट अपडेट्स बिफोर द प्राइस एक्चुअली चेंजेस. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री, तो उसके अंदर प्राइजेस चेंज होते हैं तो हमारे को एक नाइट पहले पता चल जाता है एंड वी अपडेट दोस प्राइजेस ऑन आवर एप्लीकेशन राइट अवे. Okay, so you have a dedicated team who physically does that. Yeah, we physically does that. Also, we keep some absorption capacity. So in the worst case scenario कि हमारे को बहुत बुरा लॉस ना होए. Okay, Right. so you got a good finance guy behind that, I'm sure. Right. I guess I am the finance guy behind that only. Oh, is it? That's Yes. nice. That's nice. Because So, my co-founder is a tech guy. He works on the tech part fully, and I am the finance guy. I work on commerce, finance, etc. okay. So सम्यक आप जो ये है कैसे मैनेज करते हो? मतलब यू बाय मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर एंड सेल इट टू द कंज्यूमर, राइट? दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. सो Perfect. इसमें व्हाट्स योर कट और मे बी व्हाट्स द opportunity that you get to ride on? Okay. So we are working fully asset light on a fully asset light model. हमारे पास कोई इन्वेंट्री नहीं है. वी आर कंप्लीटली इन्वेंट्री फ्री फ्रॉम ऑन आवर बुक्स एंड वी परचेज मटेरियल्स फ्रॉम द टॉप लेवल सप्लाई चेन. तो इस मटेरियल इंडस्ट्री में ना, तो दिस इज अ वेरी बल्की मटेरियल. अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल्स की, बहुत बल्की मटेरियल है. इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसकी मूवमेंट सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्ट होता है. तो हम ट्राई करते हैं टू गेट मटेरियल्स फ्रॉम द टॉपेस्ट लेवल ऑफ सप्लाई चेन. अब अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाद सुपर डंप होल्डर्स आते हैं, डंप होल्डर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, डीलर्स आते हैं, फिर रिटेलर्स आते हैं. तो इट्स अ बिग सप्लाई चेन. ठीक है. तो जितना हम उस सप्लाई चेन में पीछे जाके परचेज कर पाएंगे, उतना ही वी कैन इंक्रीज आवर मार्जिन एंड स्कोप ऑफ प्रॉफिट्स. तो वी ट्राई टू directly purchase from the distributors, super distributors, and directly sell it to the customers. So that is where we earn the margin. दैट्स इंटरेस्टिंग. सो आपने आपने कब से इस बारे में सोचना चालू किया था, इफ आई मे आस्क? सो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो यार कॉलेज डेज से ही ना आई यूज टू वर्क पार्ट टाइम विद माय फादर. तो माय फादर इज बेसिकली इनटू द वुडन इंडस्ट्री. दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री सिंस लाइक 25 years. तो उधर जाके ना ग्राउंड रियलिटीज पता चली. जब भी लाइक व्हेन आई यूज्ड टू सिट माय फादर हैंडल सम ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, तो ग्राउंड रियलिटीज पता चलती हैं. एंड उन ग्राउंड रियलिटीज को जब तुम्हें रियलाइज होता है ना कि यार इनमें ग्राउंड रियलिटीज क्या है एक्चुअली, और क्या मार्केट का सिनेरियो चल रहा है एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, तो तब बैक ऑफ द माइंड यू गेट एन आइडिया कि यार ये इसमें कुछ करना है. ठीक है. कि बॉस ये इसमें लैग है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम फोड़ सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आई राइट अवे आफ्टर माय कॉलेज मैंने डैड का बिजनेस ज्वाइन करा. आई वेंट टू कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लेना था डेफिनेटली, उन सर से काफी कुछ सीखना था, सो दैट कि एक कंपनी को अपने पापा वाली लर्निंग से ज्यादा एक पापा वाली लर्निंग प्लस एक कॉर्पोरेट मिक्स के साथ हम चला सके, सो दैट हम उसमें एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न का कुछ अलाइनमेंट लाके एक नया वेंचर स्टार्ट कर सके. सो दैट इज व्हाई आई जॉइंड कॉर्पोरेट and I worked as a financial analyst for over 2 years. उसके बाद I realized कि now is the good time. Now is the good time to hit the market. Let's launch our own product. Let's sit and उस time पे I sat down with my friend. Actually, the co-founder, he's my school friend. So at that point of time, I sat down with him. He comes from the similar industry.
तो तब हमारे को काफी कुछ रियलाइज हुआ, तब हमने काफी चीजें डिस्कस करी। उस टाइम पे भी लॉन्च माई इंफ्रा। Nice. So you make a lot of plans with school friends of opening a business, and you actually did that. Oh, definitely. I have made a lot of plans, tried to execute them, failed at them, and then finally, my infra. It's going fine abhi tak to. Let's see what future has in for us. So what vision do you hold for MyInfra? Like any expansion ideas that you have that you would like to share? Definitely, we are planning to expand all over India in the mega cities at least in the next coming 2 to 3 years. So next financial year तो हम दिल्ली फोकस ही कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पूरा अपना पैर जमाना है, पूरा 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 ग्राउंड पे अपनी रीच बनानी है। बट उसके बाद वी डेफिनेटली प्लान ऑन एक्सपैंडिंग टू द अदर सिटीज लाइक द ट्राई सिटी चंडीगढ़ मोहाली, उसके बाद जयपुर। So we plan to launch MyInfra app in tier 1 and tier 2 both cities expansion plan के लिए। and इसके साथ expansion will be done in other ways as well with respect to expanding the vision of application itself। अगर मैं दिल्ली की ही बात करूं या फिर मतलब जब हम एप्लीकेशन का विजन बढ़ाएंगे ना, तो उसमें सिर्फ दिल्ली नहीं पूरा इंडिया ही केटर हो रहा होगा, बिकॉज मटेरियल्स के लिए वी हैव टू मूव वन बाय वन टू वन सिटी टू अनदर सिटी टू अनदर सिटी। बट इफ वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन एज अ होल, तो वो प्रॉब्लम्स ना बिल्डर्स की तब भी सॉल्व कर रहा होगा जब वो मटेरियल्स इधर से नहीं खरीद रहे होंगे। वो किस रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा होगा? वो हमारे बाकी फीचर्स के टर्म्स में सॉल्व कर रहा होगा। द अदर बेनिफिट्स दैट वी आर गिविंग, दैट इज आवर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। तो उस टर्म्स में वो बाकियों को हेल्प कर रहा होगा। So what are the other benefits that you give with that? So basically, the first benefit that we are giving, the first feature that we are giving is the site management and analytics feature। तो ये इन ऐप ही है। इट्स बेसिकली अ टैब एप्लीकेशन के अंदर जहां पे अ बिल्डर कैन गो एंड मैनेज एवरीथिंग विच गोज इन एंड आउट इन द साइट, इन अ कंस्ट्रक्शन साइट। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डर को डेली बेसिस पे ना कैश फ्लोज मैनेज करने होते हैं। क्लाइंट से कितना पैसा आया, मैंने वेंडर्स को कितना पैसा दिया, मैंने लेबर को कितना पैसा दिया, मैंने प्लम्बर को कितना पैसा दिया, मैंने एक्स वाई जेड लेबर को, कॉन्ट्रैक्टर को या फिर किसी और चीज के वेंडर को, सप्लायर को कितना कितना पैसा दिया। तो मैनेजिंग, एवरीबडी इज मैनेजिंग दैट ऑन पेन एंड पेपर। अगर मैं छोटे लेवल की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बिल्डर्स लाइक डीएलएफ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल टू मीडियम लेवल बिल्डर्स जो कि पेन ऑन पेपर पे करते हैं ये मैनेज। तो that is where MyInfra app will come in, and they can handle everything on the application from attendance to the cash flows। तो एक and they can create multiple sites। तो अगर वो किसी भी पर्टिकुलर साइट को सेलेक्ट करेंगे, उसमें देख चेकआउट एनालिसिस, तो दे गेट टू नो कि उन्होंने एक एक्स वाई जेड टाइमलाइन में, टाइम फ्रेम में क्या करा अपनी साइट पे, एंड व्हाट इज द cash flows that they had in the previous month, how much did they have paid to the vendor, how much is pending, how much are, what exactly is the attendance of X labor, and uske according they can pay their wages, etc. So everything can be managed over the application। Do you even give the option of managing the costs and analyzing the costs? Yes, so as I told you कि prices जैसे change हो रहे हैं ना, तो अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं होगा कि 100% मटेरियल इज गोइंग थ्रू माइंफ्रा। तो देयर वुड बी एन ऑप्शन फॉर द बिल्डर कि वो एंटर कर सकता है कि उन्होंने फॉर एग्जांपल एक एक्स मटेरियल लिया वाई प्राइस पे, तो दे हैव एंटर दैट इन्फॉर्मेशन ऑन आवर एप्लीकेशन, एंड वो प्राइस कंपैरिजन ना पहले से होता रहेगा क्योंकि मल्टीपल टाइम्स परचेज होती है सेम मटेरियल की, एंड प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दे परचेज स्टील एट 63 रुपीज ऑन द करंट डेट, एंड फ्यूचर में जाके उन्होंने 61 भी परचेज करा और 65 भी परचेज करा। तो वो एवरेज आउट प्राइसिंग उनकी ओवरऑल टाइमलाइन में निकाल सकते हैं, वो उनको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगी। So you are very well connected with the industry. So कहाँ देखते हो? Where do you see real estate in next 5 years, like on a whole economic front? So मतलब it is very clear that infrastructure industry of India is booming। Even the government, if I say, they are really focusing on the infrastructure industry। People have started, so after COVID, infrastructure industry में काफी तेज मूव आया है। If I talk about the even the real estate industry, even the new construction industry, तो न्यू कंस्ट्रक्शंस भी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो रही हैं। टीयर टू सिटीज में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है।
Like a lot of construction is taking place in the tier 2 cities, and people are moving from tier 3 to tier 2, tier 3 to and tier 2 to tier 1. So उस change की वजह से भी real estate industry is also booming. Okay. So my infra is hitting the right spot, I may say. Definitely. It's hitting the right spot. It's I guess it's the right time, and I guess it was the right time for us to start it. Nice. So, Samyak, what advice would you have for me or for the other budding entrepreneurs out there who are, just out of their college or making plans with their friends of starting a business and, confused about how to execute them? What advices would you have for them? सो बेसिकली देखो यार, एडवाइस उन गलतियों से होके दी जाती है जो हमने खुद पास्ट एक्सपीरियंस करी है, राइट? गोइंग राइट अवे इनटू इट, डूइंग इट इज माइट साउंड गुड और अच्छा भी होता है, बट डूइंग थॉरो मार्केट रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारे ऑडियंस क्या है और तुम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, एंड टू अंडरस्टैंड इट कि यार तुम एक्चुअली वो प्रॉब्लम है भी या फिर तुम उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो। दैट इज द बिगेस्ट थिंग एक एंटरप्रेन्योर जो क्रैक काफी बार नहीं कर पाता। अब इनिशियली व्हाट हैपेंड वाज कि वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे, हमने उनको एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश करी, बट दे डिड नॉट गो वेरी वेल। उसका रीजन यही था कि वी डिड नॉट डू अप्रोप्रिएट मार्केट रिसर्च, अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ द क्लाइंट, ऑफ द सप्लायर्स। तो उसकी वजह से वो चीजें कई बार फेल हो जाती हैं। उसको एक स्टेप बैक लेके वापस से सोचना चाहिए, उस पर रिसर्च करनी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मार्केट का क्या सिनेरियो है एग्जैक्टली, एंड देन यू शुड hit the spot and like directly move in. Okay. So I guess research is the core value that MyInfra has right now. Yes, we have like if I tell you, तो हमने बहुत ज्यादा वर्क करा अपनी सप्लाई चेन पे ऊपर। मतलब कि कमिंग फ्रॉम द बिजनेस इंडस्ट्री, कमिंग फ्रॉम द बिजनेस फैमिली इन द सेम इंडस्ट्री, हमारे पास काफी अच्छा नेटवर्क था, काफी अच्छा नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट्स, बट उसके बाद भी वी डीपली डाइव्ड इनटू प्रोडक्ट्स की नॉलेज गेन करने में, वी डीपली डाइव्ड इनटू द सप्लाई चेन, बिकॉज एट द एंड अगर तुमने ये दोनों चीजें नहीं करी क्रैक, तो तुम B2B में नहीं एंटर कर सकते। अगर तुम जो मटेरियल ओन कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तुम्हारे को उसकी नॉलेज नहीं है, इफ यू डू नॉट ट्रांसफर दैट नॉलेज टू योर एम्प्लॉइज, इफ यू डू नॉट ट्रांसफर दैट सप्लाई चेन की नॉलेज, तो तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे, यू वोंट बी एबल टू वर्क। Also maintaining a healthy relationship with each and every stakeholder of the business is very important. So that is something an entrepreneur should definitely look at. Now I'm getting to know the HR of the company also. Nice. So I guess Samyak, an entrepreneur has to be each and everything at least at the starting. तो right. इनिशियल लेवल से ही सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। सो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है विद रिस्पेक्ट टू हायरिंग पीपल इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब पर्सनली मेरे को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। Okay, so now coming to hiring, as you have mentioned, क्या एक ऐसी चीज़ है जो you love to see when you hire people? कि नहीं यार, ये है तो मतलब ये तो टीम में होना ही चाहिए, दिस इज द मस्ट हैव क्वालिटी। मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू हायरिंग मैं बताऊं तो वी डू नॉट कीप एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी लाइक चीजें प्लेट पे कि हमारे को ये चीज होनी ही होनी चाहिए। हमारे को वी जस्ट लुक फॉर कि द पर्सन शुड हैव ग्राइंड, द पर्सन शुड हैव डेडिकेशन, उसके अंदर काम करने की भूख होनी चाहिए कि मेरे को काम करना है। आई एम वर्किंग विद अ स्टार्टअप, तो उसको विजन दिखना चाहिए बेसिकली कि यार अगर मैं इस लेवल पे इसके साथ काम कर रहा हूँ, देन आई कैन सी माई सेल्फ ऑन द टॉप इन द कमिंग मंथ्स, इन द कमिंग ईयर्स। तो उसके अंदर वो भूख होनी चाहिए, उसके अंदर वो ग्राइंड होना चाहिए कि हाँ यार मेरे को इसमें करके दिखाना है। एंड ऑब्वियसली ही और शी शुड हैव द पावर टू लर्न। बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में अगर वो सीखने के लिए कैपेबिलिटी, सीखने की कैपेबिलिटी रखता है, देन ही और शी इज द राइट फिट फॉर अस। ओके, आई लाइक दैट, कैपेबिलिटी, सीखने की कैपेबिलिटी रखता है, राइट। नाइस। Okay, so Samyak, coming to logistics, how do you manage it? Like, do you have your own physical fleet of
trucks or maybe vehicles, or do you lease out to someone? So right now we are totally using the third party logistics. So we use some of the modern logistics companies like Vahak, Porter, etc. for some goods. And in some categories, the supplier is already providing the logistics facility and supplying it to the directly to the sites. So that is how we are running it right now. But with respect to future, we might be looking forward to onboarding some fleet by leasing them out to increase the margins because एक बड़ा chunk of margin जो होता है वो logistics में चला जाता है. So if we want to gain that some certain percentage of margin more, तो हमारे को वो logistics की तरफ move करना पड़ेगा. But we don't have any plans to immediately move into that market because we want to first set our foot into the core work that we are doing, and उसके बाद we would be looking forward to that. Okay, so that's maybe optimization in the language of your co-founder. Yeah, Right. right. Nice. Okay, Samyak. So, again, thank you for coming here, being the part of this talk, and sparing a wonderful time on a Sunday morning. At Thank you this so much, crucial Vivek. moment. So it was very good and nice to have you here and talk to you and learn from you about your own business, about real estate, about logistics also. So any closing thoughts that you have in your mind, any advice, any learnings that you would want to share to the audience? Uh, Yes. So the closing statement would be that जो मन में आ रहा है ना बॉस उसको फॉलो करो. अगर तुम्हारे को एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं जाना ना आगे तो मत जाओ. थोड़ा सा अन और ट्रेडिशनल वे फॉलो करो एंड जस्ट ट्राई इट आउट. करके देखो, क्या पता कुछ बड़ा हो जाए, कुछ फोड़ दो तुम. And thank you so much, Vivek, for having me here. It was great to talk with you. And you guys are doing crazy work with the insurance industry, bringing insurance for the small and medium scale business. Because a lot of businesses doesn't know the importance of business. At least these days, they should try it because it's not very expensive, I guess. अब तो बहुत सब कुछ feasibility इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, and उसके benefits are more than the cost that they incur. So thank you, Samyak. Thank you so much for that. Thank you so much for mentioning that also. And yeah, goodbye. Okay, bye. Take care. Thank you.